Hello everyone, welcome to PSC Notes. So today in our modern history, we are going to cover Morley Minto reform in the year 1909, which is very important, have been asked several times in the prelims. So what were the Morley Minto reforms? Morley Minto reforms were the constitutional reforms introduced in British India in the year 1909. What was the purpose of these reforms? It was introduced to increase the Indian participation in governance. बहाना तो उन्होंने यही मारा था कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन. तो who designed the Morley Minto reforms? So they are named after John Morley, the Secretary of State of India, and Lord Minto, the Viceroy of India at the time of Morley Minto reforms. Now, coming to the most important thing, that British colonial rule उस समय political condition क्या थी, ठीक है? तो there was growing dissatisfaction with the British policies. There was growing dissatisfaction because of the after the formation of Indian National Congress, and particularly after the Surat split, so there was even much higher dissent in the Indian population against the British policies. Also, the partition of Bengal led to the strong nationalist protest. Formation of Muslim League. Now, this is crucial. Formation of Muslim League in 1906 by Aga Khan demanded separate political representation for Muslims. So, Morley Minto reform led to the expansion of legislative council, increased the size of imperial and provincial legislative council. इंट्रोड्यूस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है रिगार्डिंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 इज दे इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स got their own separate electorate. Means the seat which are reserved for Muslim, only the Muslims will vote on those seats. It increased the representation, and some Indians were allowed to be nominated in the council. More powers were given to the council. Non-official members could now discuss the budget question. Okay, but the most important thing is the introduction of separate electorate. And because of it only, the nationalist leaders have opposed the Morley Minto reforms, and that it is based on the divide and rule policy. Divide and rule policy. Britishers wanted to weaken the Hindu-Muslim unity, or they were able to weaken the Hindu-Muslim unity to a greater extent, because after the Morley Minto reforms, the Muslim League position, particularly amongst the Muslims, were increased, and it also leads to appeasing the Indian elites to satisfy the moderate leaders of Indian National Congress and Muslim League. अब moderate को क्यों? ताकि जो extremist हैं उन्हें sideline किया जा सके, because the extremists were demanding, they never supported the Morley Minto reforms because of the separate electorate, and preventing nationalist uprising to control the rising demand for self-governance, because Swaraj की डिमांड काफी हो रही थी. बिकॉज ऑफ दैट ओनली these Morley Minto reforms were introduced, और they strengthened the British control. More participation but no real power. पार्टिसिपेशन तो बढ़ाया बट पावर फिर भी ब्रिटिशर्स के ही हाथ में है. तो देवर इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ Morley Minto रिफॉर्म. तो लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन ने मोर मेंबर तो दिए बट पावर कम. मेंबर तो इंक्रीज किए बट पावर कम. कम्युनल पॉलिटिक्स इंक्रीज की बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट लीड टू कम्युनल डिवीजन, है ना. मुस्लिम लीग की स्ट्रेंथ और पॉपुलरिटी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस
पर्टिकुलरली अमंग द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, है ना, वो इंक्रीज की। और नेशनलिस्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिटिसाइज द लिमिटिकल पॉलिटिकल राइट्स एंड पर्टिकुलरली द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म, तो क्या क्या किसने कहा और किस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इट कंसिडर्ड द रिफॉर्म इनएडिक्वेट एंड डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज का डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पॉल, दे कॉल्ड इट ब्रिटिश प्लॉय टू डिवाइड इंडिया। डिवाइड एंड रूल करने का इनका टारगेट है। ये लाल बाल पाल जो कि हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने कहा। आगे सेपरेट इलेक्टोरेट सीन एज अ स्टेप टुवर्ड कम्युनल डिवीजन। कम्युनल डिवीजन को बढ़ावा देगा। ग्रेटर पॉलिटिकल पावर, इंडियन वांटेड अ रियल डिसीजन मेकिंग पावर। यहां पे केवल जो है वो इंक्रीज की गई नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, बट रियल पावर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में नहीं दी गई। ठीक है, नाउ कंपैरिजन लेटर जो रिफॉर्म आए, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक मॉन्टेक्लेसो रिफॉर्म 1919 इंट्रोड्यूस डायरकी बट लिमिटेड सेल्फ रूल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो मेजर पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी, ठीक है, इसने प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी बट ब्रिटिश कंट्रोल स्टिल था। ठीक है, प्रोग्रेसिव धीमे धीमे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इंडिया ड्राफ्ट हुआ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन फाइनली वी वर एबल टू गेट अ रिपब्लिक इंडिया। नाउ व्हाट वाज द लीगेसी? सी, it set the foundation of communal representation in Indian politics. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने जो कम्युनल पॉलिटिक्स की नींव रखी थी, वो फाइनली पार्टीशन में रिजल्ट आई। ठीक है, मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बिखरा गया। ठीक है, इवन इन 1916 देयर वर पैक्ट्स, ठीक है, बट स्टिल यूनिटी कभी नहीं आ पाई, है ना। तो इम्पैक्ट ऑन फ्रीडम स्टाइल, सेल्फ रूल और पॉलिटिकल राइट्स का इंक्रीज तो हुआ, और मॉडर्न गवर्नेंस के लिए इट वाज अ इंक्लूसिव बट नॉट अ डिसाइसिव, बिकॉज यहाँ पे मेंबर तो इंक्रीज किया लेकिन रियल पावर नहीं दी थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। Now, few previous year questions like UPSC prelims 1996 में पूछा गया है, Indian Council Act 1909 was provided for communal representation. ठीक है, तो ये communal representation के लिए था, divide and rule policy के तहत। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म was passed in the year 1909, important year है। ठीक है, नाउ whom did राजेंद्र प्रसाद considered as father of Pakistan? See, father of Pakistan राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को कहा, because we already discussed that the seeds of a separate state, the electorate, the Muslim electorate, a separate Muslim electorate, a separate country, no, they were sown by Lord Minto only through Morley Minto reforms, and later on they were developed. They tried that the communal politics is increased in India so that the nationalist movement is not strengthened. Now, seeds of discourse, which event during the national movement and which eventually divided the country. So they are reservation of seats and separate electorate for Muslim in the legislative assembly. It is Morley Minto reform. ठीक है, thank you.